Okay. Okay. We shall start today with the frame of suit topic, and in which we will be discussing about uh, this topic will include order 1, 2, and 3. Okay. Kindly write down a question. Does a fresh suit lie in respect of the same cause of action? Does a fresh suit lie in respect of the same cause of action where plaintiff has failed to sue for the entire claim in the previous suit? I repeat, does a fresh suit lie in respect of the same cause of action where plaintiff has failed to sue for the entire claim in the previous suit? All right. Kindly take few moments and write down what laws you will be elaborating in answering this question.
Is anyone? So it clearly comes out that they are directly hitting order 2 rule 2, correct? You will be explaining that how every suit shall be including the whole of the claim. The reason being that it will avoid multiplicity of proceedings and it will be helpful in deciding the comprehensive suit, so that all the matters are related to that one particular uh, plaint or one particular claim is disposed of within one suit. Now, what if some portion of it is left? Can it be uh, can it be made out in another plaint? Order to rule 2 strictly in the strict language says that if the plaintiff omits so to do to sue any portion of the claim, then he'll be barred from reclaiming that claim because he has left in the earlier suit. So that will not be allowed by law. You will be explaining, starting with the order to rule 1, that whole of the suit should be there, and then after you will be left with the option that you have to explain order to rule 2, and that how if such a position happened and the law will be barring another suit using the order to rule 2. Now, in addition to all of this, there will be a provision order to rule 3, order to rule 2 का further subsection rule 3, where it says कि अगर आप किसी की जो मिशन आप करते हो that ये सूट हम फाइल करते हैं, बट इसका मान लेते हैं अगर मैं थोड़ा सा बड़ा सूट पूरा प्रॉपर सूट डालना चाहता हूँ तो मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, और अभी मैं सिविल जज की कोर्ट में जा रहा हूँ, JMIC की कोर्ट में जा रहा हूँ. What will happen in that stage? You will be valuing or leaving some of the portion out कि ये मैं अभी ट्राई नहीं करूंगा, maybe for some of the reasons. The main role of it will be that if so happens that you are leaving something, there will be nothing left that you can reclaim that suit. On the other hand, the part 3 of rule 2 says if you abandon some of the suit, some of the claim, some of the cause of action, that okay, you will not be claiming this, and you had taken a leave or taken permission from the court that I will be leaving this part, in that scenario you will be having a right to reclaim that left out portion as given in the order to rule 2 part 3, correct? So this is how you will be explaining your answer. Any question? All right. You may write down another question. Under the CPC, a litigant is directed to secure exhaustion of the relief in respect of cause of action. Under the CPC, a litigant is directed to secure exhaustion of the relief in respect of cause of action under which he files a suit. Sir, please repeat. Under the CPC, a litigant is directed to secure exhaustion of the relief
in respect of cause of action under which he files a suit. In what way does the provision in the CPC achieve this object? In what way does the provision in the CPC achieve this object? Anyone? You may have seen that this is the same, this is almost the same question as we discussed earlier. But instead of giving us direct provisions or direct hit, the language is taking us to another mode of another mode of tool. Here it is saying that secure exhaustion. Now what will be the exhaustion? कि पूरा सूट, पूरा रिलीफ मिलना चाहिए और ये लिटिगेंट को डायरेक्ट किया गया है, that the CPC is directing कि ये पूरा फाइल कर लो. जब डायरेक्शन है, then he will have to file a suit exhaustively. He cannot leave out any part of it. And what if what if it does, that the person does not claim the whole of the right? Now the question is, in what way does the provision in the CPC achieve this object? Now again you will come to rule 2, order to rule 2. You will say that in case the person has relinquished his claim or part of his claim, he will not be allowed to file another suit on the same cause of action. And like that, this provision of CPC is directing how, or the CPC is directing the litigant how to exhaustively file his suit. In this manner, you would lead to your answer. Now, write down another question. What causes of action can be joined
without the leave of the court. What causes of action can be joined without the leave of the court? कुर्ते के प्रेस मारती Okay. Now, in this particular question, it was asked that what suits could be joined, right? What causes of action can be joined without the leave of the court?
एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है दैट जहां पे प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स का जॉइंट इंटरेस्ट है, those suits can be joined together in one suit. All right. And now could you tell me that whether all of these suits, suit 1 to 5, can be joined in one single suit? Yes, sir. Okay. Why do you say that? According to Order 2, Rule 3, Hmm. joinder of cause of action, जहाँ पे पार्टीज का सेम इंटरेस्ट है, Hmm. तो वहां पे सर कॉज ऑफ एक्शंस को इकट्ठा किया जाता है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट्स को इकट्ठा किया जाता है, जॉइंटली डिसाइड कर दिया जाता है. All right. So you are saying that all of these suits from suit 1 to 5 can be joined in one single suit. Yes. Anuradha, if you could have noticed, here they have joint interest, but here only the G is the defendant. Here only 2 are the plaintiffs. And other people like E and F in this category and C here, they are not party to, or they are not jointly interested in the suit 4 and in suit 5. So what your answer should be that these 3 suits could be joined together because there is joint interest of plaintiffs as well as of defendants. On the other hand, where there is not so that joint interest is not there, those suits cannot be joined in one single suit. All right. Okay. Now answer me this: if suits 1 to 3 are joined together, what will be the valuation of the suit, and what shall be the jurisdiction of the court? Which court shall have the jurisdiction? मान लेते हैं in suit 1 is of valuation, let's say 2 lakh. 2 is of 2 lakh again, and 3 is 10 lakhs. Okay. Now the CJ, the civil judge, has the jurisdiction to try suits up till 5 lakhs in any particular state. This is the scenario. And if the suit valuation goes beyond that, beyond 5 lakhs, then civil judge senior division has the capacity to try that suit, and only the district judge can go and try about a suit more than 10 lakh, or let's say more than 12 lakhs. Now in this scenario where all these suits are joined together, where do you think the jurisdiction will become? जब ये तीनों की सूट्स को एक सूट में ज्वाइन किया तो किस कोर्ट में ये सूट लगेगा?
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर। ये यहाँ पे 10 लाख की तक की जाती है। आपने आंसर किया डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगेगा। कुड यू टेल मी व्हाई वुड यू आंसर दैट? तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है सर वो हायर कोर्ट का बन रहा है। नहीं, एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो जुरिडिक्शन बनती थी, आई थिंक वहां जाएगा। ये एट द टाइम ही है, अभी सूट डालना है हमने। और क्वेश्चन ये है कि सूट किस कोर्ट में डाला जाए। 5 लाख का तो मूव आउट ही हो गया, क्योंकि ये हमारे पास 10 लाख की अमाउंट है। हमारे पास एक कोर्ट बचती है, सिविल जज सीनियर डिवीजन, एंड अदर इज डिस्ट्रिक्ट जज। आपको आंसर बताना है कि यहाँ पे डलेगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 10 लाख का एक सूट है। और दूसरी आपके पास ये ऑप्शन है। विच ऑप्शन वुड यू चूज? ऑप्शन 1, 2 और 3? डिस्ट्रिक्ट जज सर। Why? मोर देन 12 लाख। So if you are saying more than 12 lakhs, what you are actually saying is we will be taking out the aggregate amount of whole of the suit, and then we shall be deciding in which court to file the suit. हम पहले पूरी वैल्यूएशन को एक साथ रख लेंगे कि अगर हम उनको सबको ऐड ऑन करते हैं तो वो कितनी अमाउंट बन जाती है, और वो एग्रीगेट कितना होता है। That will be deciding factor that which court shall have the jurisdiction to try these suits or these causes of actions in one single suit. हो क्या रहा है? They had the choice whether to go for single suit 1, suit 2. Now, by the provision of Rule 3, of Order 2, all of these causes of action can be tried in one single suit. Suit X, cause of action 1, 2, 3, and it will be triable by district judge. Since the jurisdiction to try suits more than 12 lakhs was relying within district judge. Is it clear? Yes sir. Okay. Yes sir. Now, what I was really trying to make you think that you will be using the language of the Bare Act. उसमें वो aggregate subject matters from the date of institution की बात कर रहा है। Now, what we have done here, हमने aggregate ही तो किया। तीनों कोर्ट्स cause of actions की valuation ढूंढ दी, और valuation कहाँ पे fall की? district judge के पास fall की, and then automatically answer would be that district judge will be trying this suit. Now, can you tell me that whether it is compulsory for the plaintiff to aggregate all these suits into one single suit, or all these causes of action in one single suit? No sir. Parties Why? have discretion. Why? Parties have discretions because Order 2 Rule 3 is about the discretion. Excellent. And why do you think it was a discretion? There is a
may word used. A plaintiff may Exactly. You hit the bullseye. यही आप आंसर में लिखोगे, and this will be the correct approach to go for. Now, what causes of action can be joined without the leave of the court? Leave of the court to a suit for recovery of immovable property. Directly, you will be going to Rule 4 of the same order, where it says that unless with the no cause of action shall, unless with the leave of the court, be joined with the suit for recovery of immovable property, except the suit claims for mean profits, for damages, and relief sought based on the same cause of action. In compliance with the Rule 4, the answer to this question will be coming. All right. Any doubts so far? No, sir. All right. Let's move on. Let's go with the next important topic, written statement and set off. What differences will you see in set off and counterclaim? आपको मुझे बताना होगा कि आप कौन कौन से प्रोविजंस, मान लीजिए एक डिफरेंस आ गया या डिस्टिंग्विशमेंट आ गई, आपको सेट ऑफ और काउंटरक्लेम में देना है, तो व्हाट यू शैल बी राइटिंग इन दिस आंसर. Take some time and ponder upon the answer, that what differences will you be discussing in answering this question.
Would you be able to speak about this? Set of is for a certain sum. This is not so. ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहा है. If the suit is of property, set off will not be a proper defense or proper claim to be done in the WS. अगर आपका प्रॉपर्टी की तरफ से या किसी और की तरफ से आपको करना है, this will not be your option. ये डील किया जाता है ऑर्डर 8 रूल 6, ऑर्डर 8 रूल 6A2. आप कितना भी लिख सकते हो, जितना 6 और जी तक है. इसके बाद व्हाट डू यू फील, इसका आप एक वो लिमिटेशन पीरियड वाला लेके आ सकते हो इसमें पॉइंट, कि इसमें लिमिटेशन पीरियड set offs limitation period commences as when the complaint was filed. बट इसमें ऐसा नहीं है. When counterclaim is filed, from that date suit shall be, or suit will not be a claim shall commence in terms of limitation period. Which one do you feel is a softer remedy and which one is the stringent remedy in these two? जैसे आपने ए ने सूट किया बी पे फॉर रिकवरी सूट ऑफ $50,000. नाउ बी अगर सूट करता है कुछ भी सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, मान लीजिए उसके पास 10,000 का उसने करना था, which remedy do you think he should go for and why? He will have to choose set off because it's a softer remedy. Softer क्यों?
काउंटर क्लेम अगर करता है तो एक तो लिमिटेशन पीरियड का उसको बेनिफिट नहीं मिलता, एंड दूसरा ही विल हैव टू बी, इसका नेचर ऐसा है कि थोड़ा स्ट्रिंजेंट है। स्ट्रिंजेंट इसलिए, जब आप काउंटर क्लेम करते हो इन द प्रैक्टिस यू विल बी एडिंग an additional application, but not so in the set off। आप अपनी WS के अंदर ही लिख देते हो दैट मेरा भी तो इतना क्लेम है, मैंने भी इससे ए से 10,000 लेना था, ये भी एज सर्टेन अमाउंट है, ये भी एज सर्टेन अमाउंट है। जब मैं सेट ऑफ इसको करूंगा, ए को ए पे डालूंगा इन द सेम सूट, मैं WS में डाल दूंगा, देन आई विल हैव टू गिव ओनली 40,000, उतना कट हो जाएगा। Sir, set off is like a shield, and counter claim is like a sword, we can say. आप ऐसा कह सकते हो। काउंटर क्लेम का आइडिया इसमें आता है कि आप किसी को जैसे पनिश करना चाहते हो, ये थोड़ा एक ऑफेंसिव टर्म है, पर दूसरी तरफ आप अगर सेट ऑफ करते हो ये थोड़ा डिफेंसिव है। ठीक है। सर, इसमें ऐसा होता है कि सेट ऑफ में हम कम, जितना अमाउंट हमें देना होता है उसमें से मतलब कम अमाउंट के लिए हम सेट ऑफ डालते हैं, और ज्यादा होता है तो आई थिंक वो काउंटर क्लेम में जाता है, ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बेसिकली आपको अगर एक आपका नेचर ऐसा है कि आपको ऑफेंसिव होगा, मान लीजिए these facts will not be giving you a clear idea that what is the difference between set off and counter claim। Let's say in one of the suits both of these have the capacity to file a suit। A सूट करता है कि मान लेते हैं 50,000 के लिए, अब वो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करो, तब मैं 50,000 दूंगा। अब इसको काउंटर क्लेम करता है। But what would you feel with this claim? पहली बात तो ये हुई, जब भी एज सर्टेन सम की बात होनी थी तब तो हम सेट ऑफ कर सकते थे, बट जब भी बात सब्जेक्ट मैटर मनी एज सर्टेन सम से बाहर गया, इट विल नॉट बी अ सेट ऑफ। फॉर काउंटर क्लेम जो चीज काउंटर क्लेम करनी है वो कब से शुरू की गई हो, और जो सेटअप में क्लेम करनी है वो कब उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया हो, इस पे क्वेश्चन है। सेट ऑफ में कहता है
जो हमने पहला एग्जांपल ए और बी वाला लिया था, सबसे पहले वाला 50,000 एंड 10,000 वाला, सेट ऑफ में कह रहा है कि ये वाला कॉज ऑफ एक्शन मान लेते हैं, ये टाइम पीरियड है, यहां पे ए ने इसको बी को 50,000 दे दिए, एंड यहां पे इसको वापस करने थे, यहां पे वो सूट डालता है फॉर द रिकवरी ऑफ बी, फाइल्स अ सूट अगेंस्ट ए फॉर रिकवरी ऑफ 50,000। एंड अब यहां पे वो इसको 10,000 किसी और तरीके से दे देता है, मान लेते हैं कि इसको अपने फ्रेंड से दिलवा दिए या कैसा भी कुछ किया, बी ने दिलवा दे। कैन दिस रिकवरी दिस बी फाइल्ड इन द सेट ऑफ, कि मैंने 10,000 इसको दे दिए हैं, पॉइंट इस पे आना चाह रहा हूं मैं, वो क्लियरली बोल रहा है कि जब आपका सेट ऑफ हो, ये कॉज ऑफ एक्शन कि मैंने उसको दे दिए हैं या नहीं दिए हैं, मान लेते हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है, वो यहाँ पे अगर अराइज हो रहा है इसके बाद, तो वो सेट ऑफ में नहीं आएगा। ओनली इफ यहाँ पे अराइज हो गया है यहाँ कहीं पे इससे पहले, ओनली देन अगेंस्ट 50,000 आई विल बी अप्लाइंग फॉर सेट ऑफ 10,000। अगर मेरा कोई सूट यहाँ पे ये सूट डालने के बाद यहाँ पे अराइज हुआ कॉज ऑफ एक्शन, या यहाँ पे अराइज हुआ, यहाँ पे कहीं भी अराइज हुआ WS डालने से पहले, ठीक है। सूट फॉर रिकवरी है, यहाँ पे फाइल किया गया, इससे पहले 1/1/2020 को ये 50,000 उसने दिए, और 1/1/2019 को बी ने 10,000 रुपये ए को दिए थे। अब ये सेट ऑफ क्लेम कर सकता है? यस ही कैन, क्योंकि ये कॉज ऑफ एक्शन की डेट है, और सॉरी सूट डालने की डेट है, और ये कॉज ऑफ एक्शन इससे पहले अराइज हो चुका है। अगर इस डेट से बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है ये वाला,
तो यहाँ पे सेट ऑफ नहीं आएगा, काउंटर क्लेम आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बेयर लैंग्वेज में ही ये क्लियर कर दे रहा है। या तो WS डालने तक जो आपको लिमिटेशन पीरियड में दी हुई है, दैट इज 30 डेज, इनमें भी अराइज, इनसे पहले कभी भी अराइज हो गया हो तो आप काउंटर क्लेम कर सकते हो। मगर मान लेते हैं आपने WS टाइम पे फाइल नहीं किया और इतना टाइम और भी लैप्स हुआ, बट आपने अब यहाँ पे आप WS फाइल करना चाह रहे हो, डिलेड पीरियड, वो कह रहा है बेयर लैंग्वेज में, अगर यहां भी आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, बी का जो ए को 10,000 देना सामने आता है, even then you can apply for counter claim at this point of time, but not beyond filing of the WS. Is it somewhat clear? यस सर। Do you have idea about equitable claim, equitable set off? यस सर। Okay, what is that? सर इक्विटेबल होता है कि जैसे आपने मेरे से पैसे लेने हैं और मैंने किसी और से लेने हैं, तो डायरेक्टली आप उससे ले सकते हैं। क्रेडिटर से ले सकते हो मीन्स। इक्विटेबल सेट ऑफ आपको, इक्विटेबल सेट ऑफ का रेफरेंस आपको CPC में कहाँ मिलता है? कुछ ऐसी प्रोविजन है जहां पे आपको उसको कोट कर सकते हो? सर अभी तो माइंड में नहीं है कि कहाँ पे दिया हुआ है ये, लेकिन है एक सर। पासिंग रेफरेंस में आपको ऑर्डर 20 रूल 19 में जो उसकी सब क्लॉज 3 है, वहां पे आपको पासिंग रेफरेंस में बोलता है वो। सर आई एम सेइंग रॉन्ग। सर जो मैंने बोला वो गलत है। आपने ठीक बोला है कि आप किसी की फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हो, हम दोनों ने एक दूसरे से पैसे लेने हैं, तो हम इक्विटेबल सेट ऑफ की तरफ जा सकते हैं। और इक्विटेबल सेट ऑफ में जाने का बेनिफिट क्या होगा कि आपको लिमिटेशन पीरियड की चिंता नहीं करनी होगी। सिर्फ इतना बेनिफिट जाता है उसमें, चाहे लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया हो अदरवाइज। जब बात इक्विटी की आती है, देन द रिटन लॉ विल बी सबसाइडेड बाय द इक्विटेबल लॉ ऑफ इक्विटी। सर प्लीज रिपीट सेक्शन एंड रूल जो आप बता रहे थे। आप रूल 20, सॉरी ऑर्डर 20 के रूल 19 में जाइए। और उसके सब रूल 3 में जाइए। यस। यहां पे आपको कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल शैल अप्लाई whether set off is admissible under rule 6 of rule order 8 or otherwise. Now what is otherwise? Otherwise is the reference to the equitable set off. Okay. It was held in, ये कहां पे ये रेफरेंस की बात आती कब से है? It was held in इंडिया की ही आप लिखते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस
Karamchand Thapar and brothers. (2004) Supreme Court. Judgment was given by R.C. Lahoti, Justice. Sir, is it landmark judgment? I think it is the first judgment on this point, on equitable set off. इसमें एक आपको एडिशनल पॉइंट बताना होगा, वो ये कि इक्विटेबल सेट ऑफ की एक लिमिट है जो इसमें ले डाउन की गई थी, दैट जो आप इक्विटेबल सेट ऑफ करो वो कॉज ऑफ एक्शन must have been arisen in the same transaction. Okay, this was held in this case. और ये सिर्फ ओनली फॉर मनी क्लेम्स. आप इक्विटेबल सेट ऑफ की रेमेडी को सिर्फ मॉनेटरी क्लेम्स में ही इन्वोक कर सकते हो. अब ये मनी एसर्टेन हो या अनएसर्टेन हो, आपको मैं ऐसे करते हैं, लिसन टू वन एग्जाम्पल कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए. ओके, आई विल बी रीडिंग दिस. यू फर्स्ट लिसन, देन वी विल डिस्कस दैट कि उसमें हो क्या रहा है. इफ समथिंग इज अनक्लियर इवन देन. ए प्रॉमिसेस टू सेल 200 bales of wool to B. To B at a certain price. B took the delivery of 170 bales. बाकी उसने नहीं ली. And was willing to take the remaining 30. Was willing to remain 30 फिर भी आ जाएं तो वो ले लेगा. However, it did not pay the remaining 30 bales, and rather he filed a suit for claiming the price for 170 bales, yet he had already supplied. He wants to set off his claim of damages for the loss suffered by him for 30 bales, which was not supplied. Here the claims of both A and B have arisen out of the same transaction. सर And साउंड there- प्रॉपर नहीं आ रही है. अभी ठीक है? अभी ठीक है? नो सर, कम है. हेलो, अभी नो सर, बहुत कम आवाज आ रही है जैसे.
अभी आ रही है?